गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं जा रहा हूँ होंडा के सर्विस सेंटर में अभी, जहाँ पे होंडा के इंजीनियर्स आए हुए हैं कंपनी से, दिल्ली से, टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम राइडर्स. सो देर आर few riders who are assembling at this Thane showroom or service center rather. And I was curious because I wanted to ask certain questions. I have certain questions in my mind. बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे नहीं, बट एक तो अबाउट दिस स्विच आई एम गोइंग टू आस्क कि बॉस, व्हाई वाज दिस इनवर्सली पुट, व्हाई द हॉर्न बटन इज इन अ रिवर्स मैनर, इट इज़ जेपरडाइजिंग दी आई से राइडिंग सेफ्टी. एंड ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैनुअल में इंजन ऑयल के बारे में लिखा है 5W30 10W30. इट्स नॉट क्लैरिफाइंग whether we can go for the throttle engine oil, which is a fully synthetic one. So क्योंकि ऐसे कुछ हाई एंड बाइक्स होती है जहाँ पे यू डोंट पुट फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, कंपनी रेकमेंड करती है. आई हैव सीन दैट इन दी वर्सेस मैनुअल. सो लेट्स सी. अब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे. आई विल नॉट बी शूटिंग व्हेन आई टॉक टू दोज पीपल बिकॉज आई अंडरस्टैंड दे आर ऑन ऑफिशियल विजिट. इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग कैंडिडली कि मैं उनका ये शूट करूँ. So I will put my input, what discussion I had with them after this meeting with the engineers from Honda. So stay tuned, and I'll be back soon. अमर सर, सो आई एम आउट ऑफ द शोरूम नाउ. काफ़ी लंबा सेशन था. ऑलमोस्ट वी स्पेंड, आई रीच देयर एट 11:30 or rather 11 o'clock, and there were two teams from Honda. One was the technical team, engineers थे, and there was also the sales team, sales and marketing team. So there were, I'll say, feedback from the customers, from the users, from both aspects. Technically, what is the feedback, and from other areas like the experience, the aesthetics, or whatever. It could be, I'll say, purely marketing reasons. So I'll just cover क्या हुआ. Like I said, कि पहले जो engineers थे उन लोगों ने बाइक को पूरा ये किया. So the points that I brought up when I was having this discussion with them was around I'll say whatever I have spoken in my reviews. एक तो था, मैंने जो सीट नॉइज़ था उसके बारे में बताया कि there is a small solution which they acknowledged. I hope they implement it. And there was another solution which was more of I'll say, I don't know whether they will implement it or not, but not a solution but a suggestion ki if they can change the headlamp. So the headlamp is also, the stock headlamp is also poor, and if you if the winkers, the front winkers that they have on the bike, अगर उसको वो लोग जो ऑरेंज के बदले just to for this BS4 compliance, जहाँ पे आपके टू व्हीलर्स की लाइट चालू रहनी चाहिए when the bike is running, वो जो ऑरेंज विंकर्स है उसकी जगह में अगर ये लोग सम वाइट विंकर्स फॉर दैट दैट DRL पर्पस, एंड देन व्हेन यू टर्न द इंडिकेटर बटन, अंदर का जो ऑरेंज LED है वो शुरू हो जाएगा. रिंग जो है बाहर का वो वाइट हो सकता है, एंड देन यू कैन हैव अ कन्वेंशनल हेडलैम्प. सो दैट वाज अनदर सजेशन आई कैन आई थॉट ऑफ गिविंग देम. आई थिंक it's too much of a suggestion because there is a lot of investment that goes into designing and changing the entire setup. So ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कट कर रहा हूँ just for this video. And उसके अलावा I spoke to them about the absence of gas filled shock absorbers, because I felt when you're riding with a pillion, the bike tends to do a hyper action in the rear side. अगर आप हाई स्पीड में कोई बम्प लेते हो तो इन अ गैस फिल्ड शॉक अब्जॉर्बर, द बाइक वुड नॉट कीप ऑन जंपिंग आफ्टर द इंसिडेंट और दैट बम्प हैज़ गॉन. बट इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड शॉक अब्जॉर्बर्स,
the bike tends to keep on jumping at least for another 2-3 seconds till the time until it comes to stationary. So वो एक point था. In fact, one more point I wanted to I brought out was जो suspension का जो setting है, if you keep that at the company setting which is 2/5, and if you are riding on bad patches, होता क्या है कि your spring का जो tension है वो जो आपका जो एडजस्टर होता है उस पर से निकल जाता है, स्प्रिंग थोड़ी जब एक्सटेंड होती है तभी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो सेटिंग है वो चेंज होता है ऑटोमेटिकली. ये मेरे साथ हुआ है. सो फ्रॉम 2 इट वेंट टू द सॉफ्टेस्ट वन. इट ऑटोमेटिकली मूव बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन कि बैड पैचेस के ऊपर आप जाते हो तो द टायर कम्स इन द एयर फॉर सम for a while and इसमें spring expand हो जाता है and then there is no load on the setting. तो वो एक है. ये एक point मैंने उनको बताया. What else? The other point was, I don't know whether there is a road or not. ये तो मैं almost dead end में घूम रहा हूँ. Sorry. Another point that I brought out was what was that? हाँ, ये जो ऑयल लीकेज. सो ये मैंने और एक चीज़ बताई कि जो न्यूट्रल स्विच जो है विच इज़ ऑन योर लेफ्ट साइड, ये जो नीचे बता रहा हूँ मैं अभी, वो न्यूट्रल स्विच के ऊपर एक ओरिंग होती है. इट्स काइंड ऑफ स्विच दैट फिट्स इन द गियर बॉक्स. उसको एक ओरिंग आती है, वो ओरिंग ब्रिटल होती है. सो दे इवन एक्नॉलेज दैट, दे आर वर्किंग ऑन इट. वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशूज विद फ्यू पीपल, द मड फ्लैप्स. So I got to know that even Honda is working on a OE mud flap, which will be kind of a press fit arrangement. It will not be there will be no requirement for any kind of drilling, any drilling to the mud guard. पता नहीं क्या लेके आ रहा है, but there is something in the making in the service in the showroom or my bad, in the factory, and बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर में घूमता हूँ मैं. तो ये एक चीज़ थी. अभी इतना टाइम निकाला है कि मेरे को अभी याद नहीं क्या क्या बात किया मैंने. कुछ बहुत ही ज़्यादा बात कर लिया. देन ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आई हैड अ वेरी लॉन्ग आर्ग्यूमेंट विद देम ऑन दी स्विच असेंबली कि ये उल्टा है. सो आई वांटेड टू हैव अ टेक्निकल रैशनल कि ये उल्टा क्यों है. अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट आंसर मी नाउ, बट दे सेड दे विल गेट बैक टू मी ऑन दिस. तो वो एक है. एंड I even gave them an example कि अगर they were saying कि ये डिज़ाइन है, होंडा का डिज़ाइन है, but design needs to have some rational. You can't keep you can't change conventional things just for the sake of design. And when it becomes it's a functional thing. It's not a just looks का part नहीं है. It is a techno functional thing. So you have to use it. और उसको अगर आप इसका पूरा structure change करते हो तो it may lead to some people are getting confused. A lot of people are getting confused. That was one thing. They will get back to me on that. Another thing I spoke was in the service manual, in the owner's manual, there is no clarity on whether you can go for the throttle fully synthetic oil. जो मैंने खुद से अपनी गाड़ी में डाला है. I have not put that in the service center. मैंने खुद ही किया वो. I took the oil filter from the service center and then I changed the oil myself. So there was no clarity they could give me. Again, this is something that they will get back to me with, whether you can go with throttle. Personally, I feel there is no harm in it. Fully synthetic oil is always good for any engine, as long as it is the same grade recommended, the same specification. It is same SL and JASO MA2 hai. So I don't see any problem putting. Only thing is the base, fully synthetic and mineral. So fully synthetics are always good. So let them get back to me, but I have already changed the oil, so I don't it doesn't really matter. उसके बाद then there was a kind of a interview. मुझे तो लगा अभी ये लोग फिर से मेरे को होंडा में ले रहे, ऑफर लेटर वगैरह मिलेगा. इतना लंबा इंटरव्यू था. Just joking. But almost some 30 minutes का एक राउंड अप, almost 30-35 minutes का एक राउंड अप चला, where the sales and marketing people they had a deep I'll say kind of a conversation with me. They were having that with most of the guys, not just me, but मेरा थोड़ा सा लंबा चला. तो नीचे बाकी लोग पक गए थे. And I met a lot of
fellow Highness owners which we have on our Mumbai Highness group. Was a lot of friends long due हमारा था कि we'll meet in person. Finally because of this opportunity which Honda gave us, बहुत से लोग आज आए थे and we met few people and that was a very good I'll say experience meeting a lot of fellow Highness owners. उनके साथ काफ़ी sharing बातें हुई. Coming back to the marketing, the discussion with the marketing guy, that question was those questions that they asked was mainly around aesthetics. आपने गाड़ी किस reason के लिए choose की? Did you do any were you planning to buy any other bike? Did you do any market comparison of similar segment bike? Yeah, what was your thought behind going for the Deluxe and Deluxe Pro? What was the what did you got sold for between the two models? So ये सारी चीज़ें थी. Obviously I have my own personal opinions, so I'm not saying what they are. What was my response. Quite a few suggestions. Let's see. I've given them. Those get implemented. Yeah, जैसे कि there are certain things which are very very much critical. Like I said, that O-ring जो neutral switch का O-ring है, it's a brittle material. It gets brittle when it is hot, और उसकी वजह से you get oil leakage and then it's a bad name to the brand. So small thing, 5 रुपए की भी चीज़ नहीं है, 12 रुपए की, 12 rupees की चीज़ है, but that should not give bad name to the brand. And someone like some manufacturer like Honda, which has proven history of delivering refined machines, I think they don't deserve these kind of comments. So that's my personal take. People will have their own take. I'm a big time Honda fan. I have this thing, though I will always talk neutral on the bike, but I'm big Honda fan. So कुछ अपनी तरफ से मैंने अपने suggestions दिए. So let's see, let's wait, and they are coming up with quite a lot of other things. Headlight का मैंने बताया, they are planning to come with a OE aux lights, and they also took photographs of my aux lamp जो मैंने यहाँ पे फिट किया है, कितना भी यूज़ करते पता नहीं. So that's it. I mean, almost कितने अभी तो it's almost 6:15. I was there for almost 7 hours. My God. That's mainly because besides the the interesting topic of meeting these Honda people, there were other fellow Highness owners that I was excited to meet, and उनसे बातें हुई, अच्छा लगा. That's why 6 घंटे कैसे 7 घंटे निकल गए पता नहीं चला. And so hoping to put another video which is coming up on the engine break-in. I'm just going to show you guys a practical block piston की actual होता क्या है when we talk about engine break-in. Break-in कैसे करते हो तो मैंने बताया, लेकिन break-in क्यों करते हैं ये मैं एक practical example के साथ बता रहा हूँ next video में. So stay tuned, and until then, happy riding.